Well, the game has moved at a rapid pace. Now, Pakistan losing 6 wickets for 87 in that first session, and then bundled out the visitors for 137 in one session between lunch and tea. And now they already have a score of 109 for 3 in this final session today. So, yeah, we are looking at a result, and not only a result, I think a little before than day 5. Now, how did this happen? Of course, we know and we've spoken about the spinning track that has been produced, and Pakistan seriously cashed out on it. I've got the man right here in the studio along with Amir Sohail. There you are. Sajid, welcome to the studio. बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही. जो एक्सपेक्टेशंस थी टीम की, जिस किस्म के सरफेस को प्रिपेयर किया गया था, आप लोगों ने उस तरह से उसको डिलीवर किया. थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह से आपने नोटिस किया होगा जब बॉलिंग शुरू की थी वेस्ट इंडीज़ ने, नज़र आ गया होगा उसी वक्त यहाँ पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल पहली दिन से ही लग रहा था कि स्पिन होगा, और बड़ी अच्छी विकेट इस स्पिनर के लिए बनाई है. और उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन थोड़ी सी पेस वेरिएशन उस तरह नहीं की जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर है. तो हम सिर्फ उसी चीज़ के तलाबाई के साथ बैठे हुए थे कि इस विकेट पे कौन सी पेस ज़्यादा बेहतर है, तो उस पर वर्क किया और अल्लाह ने इज़्ज़त दी. वो हमने देखा भी था कि वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स की पेस थोड़ी सी ज़्यादा थी आपके और नोमान से ज़्यादा, जो कि आई गेस वर्क भी की. तो ये आपके ख्याल में यही वे फॉरवर्ड था, यही तरीका था जिस तरह से इस सरफेस पे ज़्यादा टर्न मिलेगा और ज़्यादा बाइट मिलेगा? जी बिल्कुल, ये भी है. और ये अगर देखा जाए, ये प्लेयर ज़्यादातर अटैकिंग खेलते हैं या बिल्कुल डिफेंसिव खेलते हैं, और दो माइंड सेट से खेलते हैं. तो दैट्स वाई फिर उसमें हमें थोड़ा सा ये वाई आउट निकालना था. तो अच्छा रहा, मेरा और नोमी भाई का बड़ा अच्छा रहा दिन. You can see that in the 3 lines varied paces कम है compared to जो कि वेस्ट इंडीज़ की पेस थी स्पिन बॉलिंग की. ये हम कल काफ़ी इसके बारे में बात करते रहे कि जिस पेस के साथ वो बॉल कर रहे हैं, ऐसी पिचेस के ऊपर एक्स्ट्रा बाउंस नहीं आपको मिलता. आपको थोड़ी सी लूप के साथ बॉल करना है, तब जाके आप फ्लाइट में बीट करते हैं. देखिए, फास्ट बॉलर ने जब बैट्समैन को बीट करना, वो पेस के साथ करना है. स्पिनर करता है फ्लाइट के साथ या अपनी वेरिएशन के साथ जो है वो बीट करता है. लेकिन आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए तो बेहतर हुआ. लेकिन मैं साजिद से क्वेश्चन करना चाहता हूँ. साजिद, आपने 4 विकेट तो ले ली, आपको नहीं लगता कि आपने उसके बाद हर गेंद पे आउट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप सिर्फ 4 के ऊपर ही रह गए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए मैंने थोड़ी सी अर्ली ऑन चांस लिए जिसमें मुझे रन्स भी पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह की बॉलिंग मैंने नहीं की जिस तरह मुझे करनी चाहिए इस विकेट पे. जिस तरह के डेट हुए, तो जिस तरह के बैट्समैन थे, जो अर्ली ऑन के टॉप 4 बैट्समैन थे, वो मैंने आउट किए. लेकिन जो पीछे बैट्समैन है उसको बिल्कुल ईजी मुझे आउट करना चाहिए था. बिल्कुल मैं रियलाइज़ करता हूँ इस चीज़ को. मैं थोड़ा सा आउट के लिए गया, उसमें मुझे रन्स पड़े, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेले क्योंकि वो दोनों तरह शॉट्स खेल रहे थे, रिवर्स भी और दूसरी स्वीप भी. तो दैट्स व्हाई. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना मैंने आपसे, वो ये है कि मौसम का कोई पता नहीं है. फॉग भी बहुत ज़्यादा थिक हो सकती है. तो आप क्या समझते हैं कि किस वक्त डिक्लेयर करना और कितने स्कोर पर डिक्लेयर करना आपके लिए जो है बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम देगा कि 10 विकेट लें? आई थिंक सो आमिर भाई, अगर देखा जाए इस विकेट को, तो 323 300 प्लस इधर ही इतने रन्स करे तो हमारे लिए ये बहुत रन है. इंशाल्लाह इसमें हम इसको पकड़ लेंगे. लंच पे डिक्लेयर? जी आई थिंक सो, लंच से 1 घंटा बाद या लंच पे. इंग्लैंड और भी अब यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई है. नए बॉल के साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा है बॉलिंग करने में. आपके विकेट्स भी साथ साथ देखते चलते हुए 4 विकेट्स लिए. में आई थिंक यू शुड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. देखिए, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट. और स्पेशली जब नया बॉल आप सीम के ऊपर गिराने में कामयाब हो जाएं एज ए स्पिनर, तो वो आपको बड़ी बाइट मिलती है और गेंद जो है बड़ा शार्प टर्न करता है. और जो अच्छी चीज़ साजिद कर रहा है कि ये डरता नहीं है ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करने से, और वहीं पे जब ये बॉल करता है तो इसको जो है खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और आप जब देखें कि साजिद ने लाइन चेंज की है, इनके लिए मुश्किल हो जाता है. यूजुअली देखा गया है साजिद के बॉलर्स हंट करते हैं पेयर्स में. आप बड़ा अच्छा है कि नोमान आपके साथ दूसरे एंड पे हैं. वो छोड़ते हैं, वो ब्लॉक नहीं, वो उधर से भी विकेट ले रहे हैं और आप इधर से, तो सांस लेने का मौका नहीं मिलता बैटर्स को. देखा जाए, नोमी भी बहुत एक्सपीरियंस है. अगर मुझे रन भी पड़ रहे थे तो वो मुझे यही समझा रहे थे कि कोई इशू नहीं है, आप 5वीं विकेट पे पीछे ना जाना, जिस तरह आप नॉर्मल वे में जिस तरह आपने पहले बॉलिंग की उसी तरह कर लो. तो बड़ा अच्छा लग रहा है नोमी भाई के साथ कैरी करना, और एक पार्टनरशिप हमारी लगती है जैसे इंग्लैंड के खिलाफ, अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और इसको कैरी करेंगे सेकंड इनिंग्स में भी और सेकंड टेस्ट में भी. कोई डिफरेंस था और कितना कॉन्फिडेंस गेन किया इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग करके, जहां पे आपने विकेट्स हासिल की थी? बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ साथ साथ, तो आपकी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाएगी. इंग्लैंड के खिलाफ जो आपकी ये बॉलिंग थी, अच्छी टीम है, तगड़े बैट्समैन है, तो वहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला एज अ बॉलर. जी बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस मिला था कि टॉप क्लास की टीम है, जो टॉप 3 टीम है उसमें ये टीम भी है. तो बहुत अच्छा लगा जब मेरी कमबैक हुआ इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में, और फिर दूसरे, और फिर मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ.
तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी और पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट बात थी कि वो सीरीज़ हम जीते, उसे ऐसे बूस्ट अप मिले और फिर ये सीरीज़ पहला मैच था इसका और दूसरे दिन में हमें बॉलिंग मिली, तो दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी रही लास्ट सीरीज़ भी और इसमें भी कोशिश करेंगे कि उसको कैरी करें मैं और नोमी भाई। आप जिस तरह सेलिब्रेशन करते हो आउट करने के बाद, ज़ोर से अपना हाथ थाई पे मारते हो, दर्द तो नहीं शुरू हुई अभी थाई में? नहीं आमिर भाई पठान है, दर्द वगैरह। अच्छा, ये स्टाइल तो वैसे पंजाबी जो ये सेलिब्रेशन का, ये पहलवानों का पिक कहाँ से किया आपने, कहाँ से पसंद आया? मैं स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला हूँ, तो उधर ही से ये सेलिब्रेशन बड़ी पसंद थी। कबड्डी में ये ज़्यादातर लोग करते और तो दैट्स वाई मैंने भी इसको कैरी किया है। हाँ, इसमें मुझे ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास में 1-2 दफ़ा जुर्माना हुआ था, फ्रंट ऑफ बैट्समैन मैंने थोड़ी सी की थी, तो उसके बाद फिर जब पता चला कि ये उस वे में ये सेलिब्रेशन नहीं कर रहे तो फिर बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई। जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी और नौमान की रही है पिछली सीरीज से लेकर अब तक, आई थिंक सबसे ज़्यादा फ्रेश लेग्स फास्ट बॉलर्स की होंगी, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देखिए, इन्होंने तो एक पाकिस्तान में ट्रेंड सेट कर दिया ना आप, और ये जब तक ये खेल रहे हैं दोनों, तो उस वक्त तक तो यही चलेगा। अब इसी तरह की पिचेस जो हैं सिर्फ मुल्तान में नहीं और जगह पे भी इसी तरह की मेरा ख्याल है बनना शुरू हो जाएंगी। तो बस यही कहेंगे साजिद आपको भी, नौमान को भी, कि इस टेस्ट मैच में एक बार फिर और अपना ख्याल रखें, रेस्ट करें। We'll see you probably in action tomorrow. Inshallah. Thank you so much. All right, and time for us to take a short break. When we'll come back, we'll look into day 3. What's in store for us? Welcome back to the pitchside studio. Quick look at the match summary. Pakistan leading as of now for 202 runs at the end of day 2. There are 109 for 3 and earlier. Well, quite a lot of wickets have fallen. We'll talk about that. We've got a new guest in our studio, replacing Sajid Khan, Ian Bishop. Thank you very much for joining us. Bish, when you look at today's game, 19 wickets have fallen. You just get a feeling that the match is moving at a rapid pace. And surely, even if we try to drag it, by either side, it's not going to slow down. 333 runs also scored. Yeah, the West Indies, first of all, the West Indies, I thought the West Indies did well to come back this morning with the ball. They struck back well the last 6 wickets, well for 40-odd runs when Pakistan batted in their first innings. And unsurprisingly, in these conditions, against quality spin, the West Indies capitulated quite quickly. And I don't say that with any great joy, but the Achilles heel generally is the batting of the team, and more so against spin. So in these conditions, it was too much for them. When you're sitting at home and you're watching this test match, you're probably writing West Indies off. But when you say that international players and quality players, when they come out, West Indies would have learned a thing or two after that first innings and probably just try to correct that and survive longer and maybe get things going their way. Well, that would be the hope. And we know enough, and we, Amir, yourself, we've watched enough cricket and generally international cricket, particularly last year in Test match cricket. Bangladesh came here, they won 2-0. Who would have predicted that? West Indies went to Australia. They drew a Test match series by winning at Brisbane. Who would have predicted that? New Zealand winning in India 3-0. Who would have predicted that? So you don't take those things for granted. You hope that the West Indies spirit isn't broken the way that they saw the ball deviate off the surface and the way they fell over in that first innings, and they find some gumption, find a way to score, maybe trust their defense just a little bit more, although not many batters in the modern game predicate their game on it, and don't give up. The young guys can only learn. But yes, what Sikandar, I realized when I saw the West Indian batters approach the game, you know, as a batter, you know, you have to have a very strong exterior. One thing which gives you a strong exterior, if you're confident with your technique, or even if you're not assured or not confident about your technique, given the certain situations and surfaces, you know, you wear confidence on your chest. When they came out, they never gave you the impression that, yes, they're going to survive there or they'll be able to compete against the Pakistani bowlers. I think that's where they have to improve. You know, at least have a strong exterior or show some calmness at the crease. It was a miss. When you speak of calmness, Bish said that there will be positives that West Indies can take. 87 for 6 in that first session today with the ball. Scored 137 runs. Yes, they lost all 10 wickets. Time is still 3 days left for them, so there's no hurry in that in terms of spending time out there whenever they get an opportunity to bat. So yeah, the match is still pretty much on and nothing's over. Now, talking about the Pakistan spinners, we saw Sajid Khan's 4 wickets. Bish is also here. Maybe we can do a little bit of a comparison. What's the difference between the two spinners
Norman and Sargent. We look at Norman's wickets now. He got a 5 for today. Any marked difference that you feel in the two, Sargent and Norman? Look, it's how left-hand, right-hand is the obvious thing, taking the ball away. It's a good combination, I would say. They feed off each other. They both bowl very tidily in terms of length. So I wouldn't say that I could discern any obvious, let's say, extreme pace from either end. I think they're just both quality bowlers. But surely they've gained a lot of confidence after the performance against England. This is the average speeds that we've been talking about. The red ones are the West Indies spinners, and the green one have been the Pakistan spinners. We discussed that in the commentary also. But that seemed to have worked for Sajid and Norman. It could be a different thing for a different bowler. But the results are here because he's lost. We've seen 19 wickets fall today, so something is going right for the bowlers out there. Now, Shan Masood, he's done well in the second innings. He's found himself a 50, and it really depends what really Pakistan is looking at in terms of lead. Some people might think that there's so much time left, keep batting on, but since the game is moving on, you probably feel, after looking at 137, that maybe bat till lunch tomorrow? Maybe beyond, a little bit beyond that. Who knows? You want to get at least 100. You don't want to take any chances and say, we go out there and take things for granted, and the opposition has a miraculous sort of day. So however long it takes to get a bit more than 100, I think that's where they should go. So you say like a lead of 300. They're already 202 at the moment. Whenever they get that 100 or a little more than that, you know, if you go about what Bish has to say about West Indian batting lineup, then 250 is more than enough. I'm just pulling your leg. I think you have to carry on batting, as far as I'm concerned. Yes, but after an hour, post lunch actually, you should think about declaring the innings. At least 3 hours. All right. Let's talk about the captain, Shan Masood, and the way he went about his knock in the second innings. 52 to his name. Wasn't really there amongst runs, but this time around, more use of feet and looked more confident. That's what we've been stressing upon. If you, as a batsman, faced with this kind of a surface, you need to be proactive. When you're a player like South Shakil, who's very confident about his defensive technique, he'll keep on nudging the ball around. He'll rely on that. But when a player like Shan Masood has to come good on a surface like this, he needs to be proactive, and that's what he did. He was not afraid to use his feet. He was getting to the pitch of the ball, and then he was using the depth of the crease, and that's where he made the difference. Very unfortunate to see him getting out in that particular fashion. Yeah. Well, Bish, now as we are wrapping up the show, you'd obviously want West Indies to repeat what they did with the ball. 6 wickets for 87. What would your words be, and how would you like to see the bowling unit tomorrow in session 1? I thought Warrican was excellent, to be honest with you. He's usurped Gudakesh Moti, who would have been probably the #1 option halfway through 2024. Warrican has now jumped ahead of him. Kevin Sinclair has shown some inclination to get something out of a surface. Jaden Seals, again, will have to come back into the attack first thing tomorrow. My concern really is Gudakesh Moti. I don't understand a lot of how he's being used. He was left out of the Bangladesh series late last year. So I'm a little bit concerned as to how much faith the captain has in his ability. But tomorrow is another opportunity to come together as a team, and more importantly, when they do get a chance to bat, there were times that Shan Masood and South Shakil in the first inning showed if you trust your defense. You're proactive, you're being proactive, and you're looking to score, but something is going to beat your bat, and when it does, move on to the next delivery, forget about it. A quick one from you. Pakistan's first inning score, leave Saud and Rizwan out, rest of the team scored less than 100. So that's something that you probably would not want to be repeated tomorrow morning. Well, when you face on a pitch like this, some players, they're bound to make failures. But it's a good thing
two senior statesmen took the responsibility and took the Pakistan team to a safety zone where spinners had the confidence to be able to get 10 wickets. All right, thank you, gentlemen, for joining me. It's a wrap here from day 2 of this first test match. 333 runs scored, 19 wickets fell. We are in for an exciting day 3, and you have to join us for this Vigotel Mobile presents Allied Bank Test Series. We'll be here tomorrow. Our coverage begins at 9:05 a.m. So don't forget to join us. Until then, it's goodbye and good night.